welcome to all here in the session of mathematics. This is the 6th episode for the chapter vector algebra for class 12. गत 5टी एपिसोड रे एलिमेंट्स बुक रो एक्सरसाइज 12a एवं एक्सरसाइज 12b रो सबुगुड़िक प्रोब्लेम डिटेल्स रे कराई जो माने भी ये एपिसोड गुड़िक देखी ना देखा चाहूच से माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाई जो लिंक दिखाई तार सुजोग नहीं पारे. ओके, तो गत एपिसोड रे आमे एक्सरसाइज 12b रो स्केलार प्रोडक्ट उपर बेस करी जो एनालिटिकल प्रूफ गुड़िक अच्छी से इंपोर्टेंट प्रूफ गुड़िक कर देइछु. आउ 5टी इंपोर्टेंट प्रूफ रही CHSE बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ला बड़ी. तो सही 5टी एनालिटिकल प्रूफ आज का एपिसोड रे स्टार्ट करिवा. सो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. रीड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन. यू हैव टू प्रूव बाय वेक्टर मेथड इन ए ट्रायंगल ABC cos A is equal to b square plus c square minus a square by 2bc. cos A एठी देइछि प्रूव करिया, cos B देइ परिबो, cos C भी देइ परिबो. तेणु आग फास्टा करदेबा तापर मु मेथडटा प्रोसेसटा बतई देबी केमती नेक्स्ट दुटा पढ़ले भी करिवो. ओके, सो लेट अस ड्रॉ द फर्स्ट वन ट्रायंगल दैट इज ABC. ABC. The sides BC represented by the vector. Suppose a vector एमती लिखिबो, नोट रे पूरा लिखिबो. CA side represented by the vector B vector and AB side represented by the vector C vector. ताले A vector plus B vector plus C vector is equal to 0 हो. कहीं वेक्टर एडिशन इन ए ट्रायंगल, वेक्टर एडिशन BC plus CA plus AB गोटे डायरेक्शन रे होची. तो वेक्टर एडिशन कौन हो? 0 हो, कारण इनिशियल पोजीशन B, फाइनल पोजीशन B, वेक्टर एडिशन ताल 0. सो वी कैन राइट A vector plus B vector plus C vector is equal to 0. पूरा लिखियो इन ए ट्रायंगल ABC A vector plus B vector plus C vector is equal to 0. That implies A vector is equal to कहते हैं minus B vector minus C vector, और you can write minus of B vector plus C vector. तापर बोथ साइड रे A vector डॉट प्रोडक्ट कर दियो. A dot A is equal to minus B vector plus C vector डॉट A vector. ओके, बुझी पाइला समझते. नेक्स्ट A vector डॉट A vector कहते A vector रो मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ B vector प्लस C vector. अच्छा, A vector टा केते थिला माइनस ऑफ B प्लस C, एठी भी मल्टीप्लाई कर परिबो माइनस ऑफ B vector प्लस C vector. ओके, दिस वन मल्टीप्लाइड डॉट प्रोडक्ट. सो A vector मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर केते A स्क्वायर. बर्तन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गला. B vector डॉट B प्लस C vector प्लस C vector डॉट B vector प्लस C vector. स्टेप वाइज पूरा करिवो नले मार्क मिलिबनी. B डॉट B दैट इज B डॉट B पूरा लिखिवो प्लस B डॉट C प्लस C डॉट B प्लस C डॉट C. This is nothing but the B vector magnitude रो square. B vector dot B vector है B vector magnitude रो square. B dot C jet C dot B commutative law holds good. That's why C dot B is equal to B dot C. So twice of B vector dot C vector plus C dot C कौन? C vector magnitude रो square. अच्छा, this is nothing but the A square. A square is equal to एती गला. That implies A square is equal to B vector magnitude रो square कहते B square. अच्छा, 2 into B vector dot C vector. 2 into B vector dot C vector होची B vector magnitude, C vector magnitude into cos theta. Theta is the angle between B vector and C vector. अच्छा, बर्तमान आमर एठी B vector एवं C vector भितर एंगल कर देखला. एटा B vector, एटा C vector. ए एंगल टा तांको भितर. So angle between B vector and C vector is nothing but the pi minus A. काहेकि this one is the angle A. That's why this angle, extra angle should be 180 minus A, that is pi minus A. ताले एठी लिख परिबा cos pi minus A plus you can write here C square. Vector C magnitude square is equal to C square. So in other word A square is equal to B square plus 2BC cos pi minus A is equal to कहते minus cos A. देखा, that is nothing but the A square is equal to B square plus 2BC minus cos A. Why? Since cos 180 minus theta is minus cos theta, that is minus cos A plus C square. Okay, so this is nothing but the 2BC minus cos A.
that is 2bc cos A is equal to b square plus c square minus a square, or in other word cos A is equal to b square plus c square minus a square by 2bc. proved. ओके बुझी पाइल समस्ते प्रूफटा माने cos A प्रूफ करलो b square plus c square minus a square by 2bc. दिस इज द cos रूल फर्स्ट ईयर पढ़थिबो cos रूल ट्रिगोनोमेट्री. सपोज cos b देइथिबो प्रूफ करिया कोन देइथंता c square plus a square minus b square by 2ca बा cos c देइथंता प्रूफ करिया a square plus b square minus c square by 2ab. ये दुटा जहाँ प्रूफ देइथिले भी पूरा सेम पैटर्न ट्रायंगल करिवो सेम पैटर्न रो एठी a plus b plus c is equal to 0 फर्स्ट नबो. एठी जो a लिखिछ लेफ्ट हैंड साइड रे a रखिलो तापर b plus c को सेपट को नेलो राइट हैंड साइड को ट्रांसफर करलो सेटा न करी कि सपोज एटा प्रूफ पड़िछि cos b ताले एठी लेफ्ट हैंड साइड रे b रखिवो आ डॉट प्रोडक्ट b बोथ साइड रे b सहित करिवो. ओके ताले तुमर एटा चली आसीबो cos b प्रूफ हे जिवो. सेमती cos c पड़ले लेफ्ट हैंड साइड रे यू शुड केप्ट c एंड डॉट प्रोडक्ट विथ c बोथ द साइड्स कर देले तुमरो सेम आंसर आसी जो जहां प्रूफ पड़ले भी तुमे कर परिबो. This one is very important proof for your coming board examination. Okay, so make it a note first. Now we'll go to the next problem. Okay. Now we read the next question. That is, you have to prove by vector method 3 altitudes of a triangle, of any triangle ABC, are concurrent. Do you know what is concurrent? Concurrent माने जानिछो ना नहीं? Altitude माने जानिछो आगो. Altitude means 3 heights. माने vertex perpendicular जोटा ड्रॉप करिवो सेटा होची altitude. Okay, so we'll take one triangle. Suppose ABC be one of the triangle ABC. Altitude माने suppose मु गोटे altitude टानली देखो एटा height, that is height. Okay, perpendicular ता माने एटा AD perpendicular to BC. आ गोटे altitude भी नहीं गली सी कोइछि 3 altitudes are concurrent. concurrent माने एक बिंदुगामी गोटे बिंदु देकी बस से माने इंटरसेक्ट करचंदी गोटे बिंदु रे सिंगल पॉइंट रे. तो आमे दीटा अल्टीट्यूड्स कॉन्सेप्ट को बुझ दीटा अल्टीट्यूड्स ऑलरेडी आमे नै जिवु तापरे जो तांकर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सपोज ओरिजिन नै जिवा सेटा को जॉइन कर दबा सी को जॉइन करी एक्सटेंड कर दबा दैट वन इंटरसेक्ट ए बी एट एफ. सपोज जदि आमे प्रूव कर देलु सी एफ टा भी परपेंडिकुलर ताले प्रूफ सरी गला. बुझी परछ ना नै आमे दीटा अल्टीट्यूड नबा थर्ड टा को जॉइन करी एक्सटेंड कर दबा जदि प्रूव कर देलु सेटा परपेंडिकुलर ताले तीनटा अल्टीट्यूड गोटे बिंदु देई गले आ कोन ओ बिंदु रे इंटरसेक्ट करले प्रूफ हे गला. अच्छा सपोज वर्टिसेस A represented by the vector A vector, B by B vector and C by C vector हला. तो वर्तमान आमे नै छु AD perpendicular to BC already we have taken सेटा सब मेंशन करिवो. सो वी हैव टेकन AD लिखा जहाँ OA वेक्टरटा लिखा से ताले OA वेक्टर लिखे तुमको सुविधा हम OA वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू BC वेक्टर. दैट मीन्स व्हाट OA वेक्टर माने A वेक्टर कहीं कहल O रो पोजीशन वेक्टर 0 एटा हला A माइनस 0 हला A परपेंडिकुलर टू BC वेक्टर. BC माने कोन C माइनस B वेक्टर तामने तांको डॉट प्रोडक्ट 0 हो ना नहीं A वेक्टर डॉट C minus B is equal to 0 लिखि परिबो. when the two vectors are perpendicular their dot product is equal to 0. जो माने एगुडा जानि पारुन सेटा प्रीवियस एपिसोड रे सब कराई छि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया छि जो माने जानि पारुन ताको जाई कि देखि नेले जानि परिबो. ओके सो A dot C minus B is equal to 0 that is A dot C minus A dot B is equal to 0 or in other word A dot C is equal to A dot B. तो ये इक्वेशन नंबर 1 था. नेक्स्ट आ गोटे अल्टीट्यूड नबा OB वेक्टर. सपोज OB वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AC वेक्टर. अगेन यू कैन राइट अगेन OB वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू AC वेक्टर. अच्छा OB वेक्टर माने स्मॉल b वेक्टर परपेंडिकुलर माने ओ परपेंडिकुलर लिखो तापर डॉट प्रोडक्ट रखियो स्टेप वाइज जाओ. B वेक्टर is perpendicular to AC vector. AC vector माने AC माने C minus A vector. अच्छा B vector is perpendicular to C minus A means their dot product should be equal to 0. B dot C minus A vector
इज इक्वल टू 0 डॉट प्रोडक्ट सिंपली कर दियो b डॉट c माइनस b डॉट a इज इक्वल टू 0 ओके अच्छा b डॉट c बर्तमान इक्वेशन 1 रे देखलो a डॉट b ऑलरेडी वी हैव फाउंड a डॉट c इटी अछि b डॉट a यार जगह खाली पुट कर देले प्रूफ हो जियो b डॉट a को a डॉट b कर दियो why since commutative law holds good in case of dot product so b dot c minus b dot a can be written as a dot b is equal to 0 or in other word b dot c minus a dot b can be written as a dot c okay is equal to 0 c देखो c वेक्टर दी पटे डॉट प्रोडक्ट अच्छी कॉमन नहीं परिवा दैट इज b minus a vector dot c vector is equal to 0 सो मान कर डॉट प्रोडक्ट 0 माने से माने परपेंडिकुलर ता माने b minus a vector देख लो b minus a vector माने कोन ab vector लिखिबो ab vector dot c vector माने कोटा कहलो c vector माने oc vector is equal to 0 that is nothing but the ab dot oc 0 माने कौन ab vector is perpendicular to oc vector ता माने oc vector माने एटा cf is perpendicular to ab ताले हमें नहीं थिलु कोन दीटा अल्टीट्यूड थर्डटा भी जो बाट देई नेलु जो बिंदु देई नेलु सेटा भी अल्टीट्यूड बोली प्रूव कर देलु सो देयरफॉर 3 अल्टीट्यूड लिखियो hence the 3 altitudes AD, B and CF are concurrent. Okay, proved. तो यही टाइप रो एनालिटिकल प्रूफ बाय वेक्टर मेथड करिया को पड़े 4 मार्क्स नले 6 मार्क्स रो पड़े तेणु मेक इट ए नोट नाउ विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम ओके नाउ विल रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज यू हैव टू प्रूव बाय वेक्टर मेथड median to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the base बुझी पालो क्वेश्चन बुझी पालो isosceles triangle माने कोन टू साइड्स आर इक्वल सम दिबाउ त्रिभुज बुझी पालो तो isosceles triangle रे median गोटे median टाणिबो सेटा perpendicular to the base एटा सब स्कूल लेवल रे प्रूव करिचो सेटा वेक्टर मेथड रे करिया पड़ुची सपोज OAB विद द ट्रायंगल तो ABC ट्रायंगल नेथिले भी हितांता OAB नियो आउटे इजीली है तो सपोज बट इज से रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर A वेक्टर B रिप्रेजेंटेड बाय द B वेक्टर एटा गोटे मीडियन नै जो मीडियन माने कोन मिड पॉइंट नबो एटा को जॉइन कर दो दिस वन इज द मीडियन OD इज द मीडियन ताले D रो पोजीशन वेक्टर कोन हबो A रो पोजीशन वेक्टर प्लस B रो पोजीशन वेक्टर बाय 2 आमर प्रूव करियार अछि OD इज परपेंडिकुलर टू द AB परपेंडिकुलर माने कोन ताको डॉट प्रोडक्ट जदी 0 प्रूव कर दबा हे जिवो हला ताले पूरा लिखिबो लेट OAB बी एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल माने बुझी पारलो OA साइड इज इक्वल टू OB साइड सो OA साइड इज इक्वल टू OB साइड ता माने कोन कहलो OA साइड OA वेक्टर रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OB वेक्टर रो मैग्नीट्यूड अच्छा OA वेक्टर टा कोन हे गला A - 0 दैट इज A वेक्टर मैग्नीट्यूड is equal to OB vector माने कौन B - 0 that is B vector magnitude तांकर स्क्वायर भी इक्वल A vector magnitude रो स्क्वायर is equal to B vector रो magnitude रो स्क्वायर ओके बुझी पाले कि now we have to prove OD vector is perpendicular to AB vector देखो so OD vector dot AB vector जदी 0 प्रूव कर दो ताले प्रूफ हे गला बुझी परछो OD vector dot AB vector ताले OD डॉट AB केते हबो को देखो OD वेक्टर माने कोन A plus B by 2 डॉट AB वेक्टर माने B minus A वेक्टर दैट इज B minus A वेक्टर A plus B by 2 जहा ताको 1 by 2 बाहर को नै आसीगी A plus B वेक्टर डॉट B minus A वेक्टर दैट इज नथिंग बट द 1 by 2 A dot B पूरा सिंपल डॉट प्रोडक्ट करो सिंपल प्रोडक्ट जेमती करा जाए A dot B minus A dot A plus B dot B बहुत सिंपल एगुड़ा याकू जमा छाड़बनी जमती हेले करके आसियो 4 मार्क नले 6 मार्क अचीव करि परिबो माइनस B डॉट A सो इट देखो हाफ केपटा सेम
ए डॉट बी जहाँ बी डॉट ए भी से ए डॉट बी माइनस एटा प्लस माइनस ए डॉट ए है कौन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी डॉट ए जहाँ ए डॉट बी से सेम थिंग. सो ए डॉट बी डॉट ए और ए डॉट बी कैंसल. सो वी हैव लेफ्ट विथ that is half is equal to half minus a vector magnitude रो square. अच्छा a vector magnitude रो square जा b vector magnitude रो square से already we have found in case of 1. so vector एठी लिखि दबो b vector magnitude square जगह रे replace कर दबो a vector magnitude रो square. so 2 are cancel. this one is plus given. so minus a vector magnitude square plus a vector लिखिल ताले हाफ इंटू 0 that is 0. कहार डॉट प्रोडक्ट 0 है OD डॉट AB 0 ताले that means OD vector is perpendicular to AB vector. so OD vector is perpendicular to AB vector. प्रूव हो गला. OD vector नहीं थिला कौन मीडियन नहीं कि तार पोजिशन वेक्टर बाहर कला a plus b by 2 AB वेक्टर सहित डॉट प्रोडक्ट नेल नहीं कि देखै देला OD परपेंडिकुलर टू AB. टर्निंग पॉइंट कोटा कहल टर्निंग पॉइंट होची एटा एटा जदि न बाहर करथान तो एटी 0 केमती हेतांता एटा B वेक्टर जगह रे ए मैग्नीट्यूड जगह रे एटा पुट करला खाली एटा मन रख देबो हे जिवो. ओके सो 4 मार्क्स अचीव करिया बहुत इजी. ओके सो मेक इट ए नोट. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ वी रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. that is you have to prove by vector method angle inscribed in a semicircle is right angle. semicircle मान जानछ हाफ सर्कल सेठी एंगल करिवो सेटा राइट एंगल बोली प्रूव करिवो. so let one semicircle is here you have to draw one semicircle. suppose the center is O. this one is suppose A and this one is A vector. OA is radius and this one represented by a vector. ताले OB जदि रेडियस भी होबो OB भी रेडियस किंतु जदि डायरेक्शन अपोजिट कर देली ताले माइनस a वेक्टर हो ताले एठी गोटे पॉइंट सपोज नबो सेमी सर्कल ऊपर एंगल टा राइट एंगल प्रूव करियार अछि. तो एई जो एंगल टा प्रूव करिवो दिस एंगल इज राइट एंगल माने यू हैव टू प्रूव 90 डिग्री. ता माने जदि प्रूव कर दवा सपोज दिस इज नेम्ड बाय CA वेक्टर डॉट CB वेक्टर इज इक्वल टू 0 ताले प्रूफ फिनिश. बहुत सिंपल अच्छी देखो. सपोज यू विल ड्रॉप दिस वन OC वेक्टर जब सपोज दिस वन रिप्रेजेंट बाय C वेक्टर ताले OC वेक्टर टा लगे केते C वेक्टर एटा A वेक्टर ए दुटा को रेडियस OC टा भी रेडियस OA टा भी रेडियस नहीं को ताले OA वेक्टर रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OC वेक्टर रो मैग्नीट्यूड. that implies O vector magnitude होची A रो magnitude is equal to C vector magnitude. ओके एटा इक्वेशन नंबर 1 देकी रखि था दरकार अब. नाउ यू हैव टू प्रूव CA vector dot CB vector is equal to 0. जदि 0 हो गला त 90 डिग्री. ओके नाउ वी हैव टू फाइंड CA vector dot CB vector. अच्छा CA vector माने एटा A vector A minus C that is A minus C vector. एगुड़ा सब वर्टिसेस कर दो बेटर हो. एटा A vector एटा हला minus A vector एटा तो 0 vector है ना. so CA vector is A minus C, CB vector is minus A minus C dot minus A minus C vector. so dot product करो simple product A dot minus A vector minus A dot C vector minus minus plus C dot A vector minus minus plus C dot C vector. so this is nothing but the A dot A minus A vector magnitude रो square minus A dot C plus C dot A जहाँ A dot C से या commutative law holds good. so A dot C plus minus cancel plus C vector magnitude रो square. अच्छा A वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू C वेक्टर मैग्नीट्यूड सिंस रेडियस लिख परियो सिंस थीटा को रेडियस बोथ आर रेडियस दैट सिंप्लाइज माइनस C वेक्टर मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर प्लस C वेक्टर मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच कैंसल 0 डॉट प्रोडक्ट 0 माने कौन
they are perpendicular. CA vector is perpendicular to CB vector. That means the angle CA vector is perpendicular to CB vector. That means ACB angle, ACB is equal to how much? 90 degree, which is right angle. Hence proved. Hence proved. Okay. तो बहुत सिंपल वे रे प्रूव कर पारियो, बहुत डिफिकल्ट नुह एगुड़ा जमा खाली एनालिटिकल प्रूफ खाली समस्त जानते एनालिटिकल प्रूफ वेक्टर प्रूफ माने बहुत डिफिकल्ट, जमा डिफिकल्ट नुह, बहुत इजिली कर पारियो। खाली मुंडर 2-3 थर रिविजन टिके कर आ बोर्ड एग्जामिनेशन रे सियोर शॉर्ट 4 मार्क्स आनी पारियो आकु अटेंड करी। ओके, एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बहुत थर देखिबो तुमे क्वेश्चन गुडा को देखिबो रिव्यू करिवो, से क्वेश्चन गुडार काउंसिल एग्जामिनेशन रे ए क्वेश्चन पड़ीची सेमी सर्कल उपरे जेकोसी गोटे एंगल राइट एंगल बोली प्रूव करिवो, एटा बहुत थर पड़ीची। तेणु कमिंग एग्जामिनेशन पाई मध्य तुमरो इंपोर्टेंट अछि। ओके, सो मेक इट ए नोट। आई विल गो टू द नेक्स्ट एनालिटिकल प्रॉब्लम। नाउ आई विल टेक अनदर प्रॉब्लम, दैट इज diagonal of a rhombus intersecting each other at right angle. Right angle means they are perpendicular to each other. You have to prove this one by vector method. ठीक अछि, vector method रे हमें प्रूव करिवा। Any rhombus is there, first you have to draw one rhombus. Suppose this one is one type of rhombus whose sides are equal. समझ जानी छ? Suppose OABC is one of the rhombus. So OA side vertices are represented by the vector, पूरा लिखी दबो, पूरा लिखिबो। Let OABC be a rhombus whose vertices are represented by the vector A vector, B vector, C vector, पूरा लिखिबो। नोट्स पाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जीवो, पीडीएफ अच्छी, पीडीएफ नहीं जो पीडीएफ नोट्स अच्छी। सो OA वेक्टर ऑपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तालो OA वेक्टर इज इक्वल टू CB वेक्टर लिखि परिबो। OA वेक्टर is equal to CB vector because तांको direction समान, तांको length समान, so therefore they are equal vectors. So OA vector माने कौन? A minus 0, that is A vector is equal to CB vector माने कौन? B minus C, that is B minus C vector, or in other word B vector is equal to A plus C, or A plus C vector is equal to how much? B vector. This is the equation number 1. एटा equation number 1 कर रख दल। नेक्स्ट हमर साइड सब गुड़ा इक्वल, सो OA वेक्टर रो साइड रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OC वेक्टर साइड रो मैग्नीट्यूड, इज नॉट इट? सो OA वेक्टर रो मैग्नीट्यूड माने कोन? A minus 0, that is A वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OC वेक्टर, OC वेक्टर माने कोन? C वेक्टर मैग्नीट्यूड, that is C वेक्टर मैग्नीट्यूड, they are equal. Equation number 2. Now you have to prove two diagonals are intersecting each other at right angle. Right angle means proof करिया को छी they are perpendicular. अच्छा, दीटा diagonal किए किए, गोटे AC आ गोटे OB. So you write, हमें कौन देखिबा? हमर एम कौन कहला? सब बळे मन रख, परपेंडिकुलर कंडीशन आसिला माने तांकर स्केलर प्रोडक्ट 0 देखै दब, तो स्केलर प्रोडक्ट बाहर करिवो, निश्चित 0 हबो। तो ए दीटार हेल्प नेबो, तले एटा कंडीशन, एटा टर्निंग पॉइंट। सो AC वेक्टर डॉट OB वेक्टर is equal to how much? AC वेक्टर देख लो, C minus A वेक्टर डॉट OB वेक्टर माने देख लो, OB वेक्टर माने B minus 0 वेक्टर, that is B वेक्टर. This is nothing but the C minus A वेक्टर डॉट B वेक्टर, just we have found A plus C. एटा ही टर्निंग पॉइंट मने रखो, एटा को मने रखिया पड़िबो। एटा आनिला माने प्रूफ हे गला, प्रूफ सरी जीवो, प्रूफ हो तापरे, किंतु एटा जदि न आनिबो सेठी बसथिबो, एटा कोन करबी या परे भाबुथिबो, बसिके टाइम पड़ेबो। बुझि परछ? तो B वेक्टर एटा टर्निंग पॉइंट मन रखो, B वेक्टर शुड बी रिप्लेस बाय A plus C. तो A plus C, A minus B, C minus A, C plus A, C square minus A square तुम जानिछो, किंतु डायरेक्ट लिखियोनी, डॉट प्रोडक्ट अनुसार लिखियो। दैट इज C dot A plus C dot C minus A dot A minus A dot C. ओके, बुझी पाल समस्ते? तो बर्तमान देख C डॉट A आउ माइनस A डॉट C, यदि कैनसल हो पार, तो C डॉट A आउ गोटे स्टेप करदेव। C डॉट C है C वेक्टर मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर माइनस A डॉट है A वेक्टर मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर, A डॉट C जहाँ C डॉट A से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड। सो माइनस C डॉट A प्लस C डॉट A कैंसल। सो वी हैव लेफ्ट C वेक्टर मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर, C वेक्टर इज इक्वल टू केते? A वेक्टर, ताले लिख पारियो A वेक्टर मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर
minus a vector magnitude रो square is equal to how much 0 ताले कहार डॉट प्रोडक्ट 0 ला SC डॉट OB 0 ता माने कोन हे गला सो SC vector dot OB vector is equal to 0 dot product jar 0 scalar product 0 means they are perpendicular to each other perpendicular hela mane they are intersecting so SC and OB are intersecting each other pura mention karibo intersecting each other at right angle okay finish बहुत सिंपल वे फिनिश कर परियो बहुत इजी अच्छे एगुड़ा तो आराम रे 4 मार्क अचीव कर परियो so that's all for the today's session in the next class we will take vector product between the two vectors that is cross product between the two vectors and the exercise elements books exercise 12C okay until then goodbye thank you